Assalamu alaikum and welcome to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. Secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions you have on any aspect of English law, you'll be able to ring on the number that appears at the bottom of your screen, and hopefully I will be able to give you some guidance in relation to your queries. The kind of matters that I can deal with or we can deal with on this show should cover most aspects of English law that affect individuals, from immigration matters, family law matters, criminal matters, personal injury matters. So whatever your question is, do please pick up the phone and give us a ring, and inshallah we will be able to guide you in relation to that. Just a couple of matters before we get going. Obviously it's a live show, so we're not able to look at documents before we advise you in detail. If it transpires that I do need to look at your documents before I advise you, then I will ask you to leave your number with the control room, and then we will make arrangements for you to be able to send your documents over to us. But in my experience, normally I should be able to advise you without looking at documents. Secondly, obviously on a live show it's not really possible to take very detailed history or very detailed information from callers. If it does transpire that your matter is extremely complicated and again you need to speak to somebody in a lot of detail, then I will ask you to leave your number and then we can have that discussion off air. In my experience, on this show, on this live show, when callers do come in, the vast majority of calls we receive, we are able to give you guidance live on air. So whatever your questions are on any aspect of the law, whether it's immigration or any other matters, you can ring us on the number that appears at the bottom of your screen. Now, last week, what we were looking at was in relation to immigration law, and more particularly in relation to how a person in the United Kingdom, somebody who's British or somebody who's settled in the United Kingdom, how they can sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom. We looked at some of the mandatory requirements, and where we got to was looking at the financial requirement within the rules. In particular, one of the more common scenarios that you face as an immigration lawyer is the situation where the sponsor, the husband or wife in the United Kingdom, is employed and has been employed for 6 months or so. And we looked at in great detail the kind of documents that the sponsor in the United Kingdom, he or she needs to submit in order to support the husband or wife's application from abroad, in terms of wage slips, in terms of bank statements, in terms of the employment letters. We looked at that in a lot of detail. Now, if viewers have any questions in relation to that, please feel free to call in. What I just wanted to do is to now move on from looking at employment, which we looked at in a lot of detail last week. We want to look at self-employment. Let me take take our first call for the day and then come back to this. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इलियास भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, आप कैसे हो? ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मेरा क्वेश्चन है इलियास भाई कि अगर कोई यूरोपियन नेशनल हो तो वो जब नेशनलिटी अप्लाई करता है तो उसको भी बायोमेट्रिक देने पड़ते हैं या कि नहीं? क्योंकि जब मैंने इंडेफिनिट किया था तो मुझे नहीं देने पड़े थे। एब्सोल्यूट राइट है कि आप इंडेफिनिट के वर्क परमानेंट रेजिडेंस में वो नहीं मांगते, बायोमेट्रिक्स के लिए नहीं बुलाते, पोस्ट ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर नेशनैलिटी में सबको बुला रहे हैं, नेशनैलिटी में सबको जाना पड़ता है। अच्छा जी। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई अपने स्पाउस को पाकिस्तान से बुलाता है जी, तो प्रायोरिटी सर्विस जो है उसमें कितने टाइम लग जाता है? स्पाउस के लिए, स्पाउस वीज़ा के लिए जी, प्रायोरिटी सर्विस का अभी प्रोसेसिंग टाइम है रफली अबाउट 7 वीक्स। 7 वीक्स। अगर ये मैंने ये देखा है कि नॉर्मली चलो 7 वीक्स उसको लग जाता है। अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे वो कोई NHS के लिए काम कर रहे हैं वो स्पॉन्सर, या तो कोई काउंसिल के लिए
उसका काम है और पूरा 18,600 वो मेन एम्प्लॉय के साथ हो जाता है, NHS के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ, तो उसको उसका एप्लीकेशन इवन ज़्यादा क्विकली हो जाता है, could be even 5 weeks, but generally speaking priority applications generally वो about 7 weeks लगाते हैं अभी at the moment प्रोसेस करने में. ठीक है, जज़ाकल्लाह. जी जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच indeed. So last week we looked at employment in a lot of detail in terms of how a sponsor in the UK can meet the requirements when they're calling their husband or wife over, and where they're working or they have been working for 6 months, the kind of documents we need to submit for that. So the sponsor would normally submit 6 months wage slip, bank statements and an employment letter in support of the husband or wife's application, and we looked at that in a lot of detail. And that is to some extent the sort of more straightforward type of application that you come across. Now, there are obviously other ways in which the financial requirements can be met. Employment goes without saying. There is then self-employment, where somebody is running their own business, whether they are a sole trader, whether they are a partner in a business. For example, somebody who is a taxi driver would be regarded as self-employed as a sole trader. So you get a lot of people applying on that basis. You might get somebody who might be running a limited company, and so they would be supporting their husband or wife's application on that basis, that the income, the financial requirement is met through the limited company. Alternatively, you might get a situation where somebody has rental income or dividend income separate from the company that they work for or work from. So there are a number of different ways in which the financial requirement can be met. Employment is just one of those ways. Now, what I want to do today is to look at the second most common scenario that you face in practice, which is where the sponsor in the United Kingdom is self-employed and runs his or her own business. As I mentioned, that could be somebody who is self-employed as a taxi driver. We get that a lot. Or they might run a shop somewhere. They might have an online business. It could be a lady who undertakes selling clothes or sewing clothes. It could be a whole variety of different types of businesses that somebody operates as a sole trader. It could be that the business is one where the person is a partner in the business, so the profits may be shared 50-50. There might be a different distribution of shares, whatever it may be. So, but the key point here is that the self-employment is not through a limited company. You're simply self-employed as a sole trader or a partner in a business, and that's again quite common for applicants to rely on their sponsor's self-employment. So let's just look at that in a bit more detail. Now, these applications are slightly more complicated simply because these applications require a lot more in terms of documents to be submitted. In terms of employment applications, where it's simply a case of wage slips and bank statements and an employment letter, here the list is significantly more extensive. Now, the key thing to remember with these applications, and if we've got viewers who are watching the show today where they are potentially going to sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom and they are self-employed, this is really what they need to focus on. The key thing is that it's not a case of looking at your self-employment income simply in the last 6 months or in the last 12 months. There is a particular time frame that you need to look at when you're looking at your self-employment income. And for those who are self-employed, not operating a limited company, simply self-employed, what they need to look at is their income in the normal financial year. So that is from April to April.
So if somebody was making an application now, we are in January 2019, then we'll look at the income from the last financial year. We'll look at that in greater detail after we've taken our next call. Hello, Assalamu alaikum. हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने मिस्टर बुलबुलिया से बात करनी है। जी आप वो लाइव है ऐप पे, जी आप बात कर सकते हैं। जी ओके जी जी आपका जो आई थिंक योर टीवी इज ऑन, तो उसका जो वॉल्यूम है ना, इफ यू जस्ट टर्न इट डाउन अ बिट ना टीवी से, इफ यू जस्ट मूव अवे फ्रॉम द टीवी प्लीज। वॉल्यूम बंद कर दें। जी और वहाँ से ओके जी जी ओके मैंने पूछना ये था कि हम लोग यहाँ पर टीयर 1 वीजा पे आए थे। जी ठीक है ओके। लेकिन फिर वो हमारा नहीं काम बन सका, हमें लॉस हो गया बिजनेस में। ओके ओके तो हमारा वो, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों की बेस पर स्टे अप्लाई कर सकते हैं? आपके बच्चे कितने साल इंडेफिनिट? जी कितने साल से यूके में है आपके बच्चे? अबाउट 7 years हो गए हैं। ओके जब 7 years उसके हो जाते हैं यहाँ यूके में बच्चे के 7 years, तो at that stage आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। at that stage तो वो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको इंडेफिनिट नहीं देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपको 2.5 years की वीज़ा वो देंगे आपको। अच्छा मगर आपको इसमें ना थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। आपको 7 years से पहले अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे आपका 7 years कंप्लीट हो जाएंगे, जब 7 years कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद अप्लाई करना चाहिए आपको। अप्लाई किसके लिए? इंडेफिनिट के लिए करेंगे, स्टे के लिए करेंगे? नहीं सिर्फ वीज़ा के लिए, सिर्फ यहाँ की वो वीज़ा दे देंगे। 2.5 years की वीज़ा देंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद 2.5 years के लिए दोबारा एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस विल कंटिन्यू लाइक दैट अंटिल आपका यहाँ यू स्पेंड 10 years इन द यूके। एट दैट स्टेज आपको इंडेफिनिट वो दे देते हैं। मगर की थिंग यहाँ क्या है, आपको उसमें यू शुड बी पेशेंट। इसमें 7 years जब हो जाएंगे ना तब अप्लाई करना चाहिए आफ्टर 7 years। ठीक है, तो ये जो 10 years काउंट करेंगे वो ये जो हम 7 years कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करें जी, तो ये 10 years तब काउंट होंगे? जैसे अभी वो हमें 2.5 year देंगे, फिर 2.5 यानी कि 4 मरतबा में दें जी, फिर वो 10 years होंगे? जी फिर 10 years का होगा। जी जी और उसके बाद तो इसमें उसके बाद वो क्या देंगे? इंडेफिनिट? जी इंडेफिनिट दे देंगे आपको। जी इंडेफिनिट होगा आपका। अगर कोई बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है ना, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन इन द यूके, तो उसको सेपरेटली, उसका रूल सेपरेट है। अगर कोई बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है तो जब वो 10 साल का हो जाएगा, व्हेन द चाइल्ड इज 10 years old, तो उसको वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए वो चाइल्ड अप्लाई कर सकता है। वो सेपरेट है। तो वो चाइल्ड उसी को मिलेगा? मेरा एक बच्चा हुआ है यहाँ पर। जी वो कब बोर्न हुआ था? वो हुआ था 2017 में। 17 में, तो उसको तो पासपोर्ट मिल जाएगी 2027 में। अच्छा, तो अभी 7-8 years बाकी है ना, तो उसको ब्रिटिश, उसका रूल्स डिफरेंट है। बच्चे को जो यहाँ बोर्न हुआ है उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगी 2027 में। ओके, मगर हमें कब मिलेगी? आपको जब आपके पास 10 साल के बाद जब इंडेफिनिट हो जाएगा, जब आपने 10 years यहाँ कर लिए, 10 years रूट में इंडेफिनिट मिल गया, उसके 1 साल के बाद आपको आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 year आफ्टर दैट। ओके जी ठीक है। ओके सर, अगर हम आपके थ्रू अप्लाई करना चाहें तो आप कर लेंगे? जी कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। जी ठीक है ना। ओके चलो, थैंक यू है आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे एक बात पूछना है जी। मेरा भाई 6 साल पहले यहाँ पे हायर स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर आया था। ओके जी। उसको एक्सटेंशन मिली, फिर उसको दोबारा एक्सटेंशन मिली। अब उसको उन्होंने जब तीसरी दफा गया तो कोर्ट में केस गया और कोर्ट में जो जज ने उसको कहा कि होम ऑफिस ने एनएफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की और एनएफ वो नहीं किया, उसका फाइनेंशियल मैटर को चेकआउट किया, सो ही होम ऑफिस शुड रिवॉर्ड हिम परमानेंट स्टे। ठीक है जी। ठीक तो है। ये इस बात को, ये जून में ये बात हुई थी जी। आप जून से लेके आप 7 महीने हो गए,
तो होम ऑफिस ऑल द एक्सक्यूजेज और बहाने कर रहा है, वो मेरे भाई को जो है ना वो इंडेफिनिटली टू रिमेन नहीं करके दे रहा, राइट। और दूसरी बात ये हो रही है कि उन्होंने भी इन बिटवीन अक्टूबर में कुछ पेपर मांगे थे, वो भी मेरे भाई ने थ्रू सोलिसिटर्स को भेज दिए थे। तो ये क्या डिले है, क्यों डिले है, इसकी क्या वजह है? तो अब ट्राइब्यूनल ने ये कहा था, ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि इंडेफिनिट मिलना चाहिए, ट्राइब्यूनल ने ये कहा। जी हाँ, जज साहब ने उसको कहा कि जी वी रिवॉर्ड यू जजमेंट इन फेवर ऑफ यू अगेंस्ट द होम ऑफिस, and home office should do more investigation about it, and if they haven't done that work properly, so in that case we award you the judgment in your favor. Okay, मगर आपने ये कहा कि ऐसा कुछ बोला था उसने कि होम ऑफिस should investigate the matter further. Did the tribunal say that? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने कहा कि they should have done. They should have investigated the matter further. Done, but right. Because he's wasting a lot of time now, so the judgment is rewarded in favor of the client. Which Okay. is my brother. All right. Okay. So the appeal before the tribunal, तो was that following a refusal of permanent residence? ये था? नहीं, refusal नहीं हुआ था, उनका ILR आ नहीं रहा था, so that's why he said to them, look, if you're not going to give it to me, I'll take it to the court. Then my brother taking them to the court, and that is what happened in the court. Okay, to which court did they go to? कोई judicial review था या first year tribunal किया था? नहीं, ये judicial review नहीं था, ये first trial था जी. First year tribunal था. Okay. तो जो home office का जो objection था, what was the objection? What was their problem with this matter? वो ये लोग कह रहे थे कि जी क्या नाम उसका, इसने जो इनकम का जब ना प्रूफ दिया है, जो हर थोड़े दिनों से स्टेटमेंट मांगते थे होम ऑफिस वाले, वो इनकम का प्रूफ जो है वो ट्रू नहीं है। जिस कंपनी के थ्रू इसको पैसे मिल रहे थे वो कंपनी जो बंद हो गई है, फैमिली रिलेटेड कंपनी थी, वो बंद हो गई है। तो हमारे पास कुछ एनएफ वो नहीं है कि सेटिस्फैक्शन के ये अर्निंग्स की ट्रू थी नहीं ट्रू थी। जो नॉर्मल उसका इश्यू होता है विद HSMP एंड T1 जनरल के साथ के योर इनकम वाजंट जेन्युइन, आपने कोई इन्फ्लेटेड इनकम बताई है इसलिए और इस पे आपने एक्सटेंशन something like that. Exactly, you got it, mashallah. Very good. Yeah. So reality ये है कि अगर if the tribunal has said already that the case succeeds and the Home Office hasn't made out their case, so they should grant indefinite leave. I don't understand why it's not being done. तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन के, क्या एक्शन हम लोग ले सकते हैं यहाँ से? There's two ways of dealing with it. I think there's two ways of dealing with it. One is कि you basically try and get the MP involved and get the MP to push them to make a decision. That's one option. Second option is, I think, a failure to action what the tribunal has said, failure to grant a visa based on what the tribunal has said. That might be something you can challenge by way of judicial review. So separate judicial review के ये केस सक्सेसफुल हो गया, as a public body उसको अभी visa issue करना है. They've been unsuccessful. They need to issue a visa, and they are delaying in issuing the visa. It may be something which can be judicially reviewed. But judicial review में ये है ना कि normally judicial review डालते हैं ना, might have a strong case, weak case, whatever it is, but it prompts them because they have to do a detailed response to the judicial review application. It may be that as a result of that, they may just say, look, we accept, we should now progress this and grant your brother status, whether it's indefinite leave or whatever it is. So I think they're the practical options that you can take. One is through the MP, trying to get the MP to push them to action and do something on the case. And secondly, looking at whether it should be pursued as some kind of judicial review against the Home Office. The claim is based on the Home Office failing to do what's required of them following the decision of the tribunal. I think there is potentially a judicial review there. That's right. एक बात सॉरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और फर्दर डिस्कनेक्शन कि जब उसने जज ने जजमेंट ली थी ना, तो उसने जजमेंट में ये कहा था कि जी आई एम नॉट गिविंग एनी रिटन जजमेंट बट आई मेक ए डिसीजन इन फेवर ऑफ यू. क्योंकि अगर वो कहता है कि होम ऑफिस ने उसको कहा कि तुम रिटन जजमेंट दे दोगे, देन इट विल बी ऑल द केसेस लाइक दिस वी हैव टू
reward them as well. So in that particular case, if the judge judge can give us a judgment in favor of you, we'll accept his judgment as one off. یہ اتنی اور بات ہوئی تھی کورٹ کے اندر. All right, okay. But for our purposes, یہ ہے نا کہ whether it only affects this case, whether it affects other case, اگر آپ کے فیور میں ڈیسیجن آ گیا, and I haven't seen the decision, but اگر آپ کے فیور میں ڈیسیجن آ گیا, and what the judge has basically said is کہ جو allegation ہے against your brother, those allegations have not been substantiated. So Home Office That's exactly what he said. Yeah, because the Home Office is making a serious allegation of dishonesty. So there has to be some basis for that. And what the judge is saying is that you just haven't made out your case. So sorry, I am not accepting what you say, and I'm finding in favor of the appellant, your brother. So now that there is a decision of the tribunal on that point, I think it's wrong for the Home Office not to follow that and try and now look for other things against your brother, which is what they seem to be doing. Exactly, I think so. مجھے تو لانگ لگتا ہے کہ look, یہاں litigation میں there's finality, کہ you know what the dispute is, you go to court and the court makes a decision on that. So that decision should be implemented. It's not good enough to then say, look, now we will try and look for further information against you. If you do that, what's the point of a tribunal hearing? What's the point of a judge making a determination? It's ridiculous lagta hai. To be quite honest, I mean, I haven't come across that in practice before. It does seem unusual. My view is you either get the MP involved and push the MP to try and get them to make a decision, or you seriously look at judicial review. The only thing I would say is if you want to do a judicial review, better to use a sort of barrister who specializes, quite an experienced barrister who specializes in these matters, get his or her opinion and then progress it. I wouldn't leave it. You know what I'm slightly concerned about? If you leave it, it gives the Home Office more time to dig for more things. Okay, ji. I would push them to do something. I think, and because look, what's at stake here is... 7 مہینے ہو گئے صاحب اس بات کو. It's 7 months now. It's a long time. It's a long time. I wouldn't leave it. My concern is that the longer you leave it, the more digging around they will do. So you need to push them either through the MP or by way of judicial review. ٹھیک ہے جی. I got it, sir. Thank you very much. I appreciate it. No problem. Thank you very much for your call. Thank you. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Hello, وعلیکم السلام. جی, thank you for calling. جی, آپ کا question. جی بھائی, میں نے وہ کوشچن پوچھنا تھا کہ میرا بچہ پیپر لیتا ہے اور اس کی وائف کو بلانا ہے, کیا پیپرز کی ضرورت ہے؟ جی, سوری, آپ کا بیٹا, آپ نے کیا کہا, آپ کا بیٹا؟ اس کی شادی ہوئی ہے. یہ رائٹ, اوکے. تو اس کی وائف کو بلانا ہے پاکستان سے, تو کیا پیپرز کی ضرورت ہے؟ اور کیا پیپرز کی ضرورت ہے؟ اس میں اس کی شادی کب ہوئی تھی؟ شادی ہوئی ہے 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے, آل رائٹ, اوکے. کبھی اپلائی کیا اس کی وائف نے 2 سال میں؟ نہیں کیا, بالکل نہیں کیا, اوکے. اور آپ کا جو لڑکا ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ یونی جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, یا ٹھیک ہے, اوکے. اس میں ہے نا مین ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے نا کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا, فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو کہتے ہیں کہ انکم انف ہے یا نہیں اس کے پاس, وہ مین اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اگر کوئی یونیورسٹی میں ہے یا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, سب کی ریکوائرمنٹ سیم, جنرلی اسپیکنگ سب کی ریکوائرمنٹ سیم ہے کہ اس کی انکم 18,600 کی ہونی چاہیے. لیکن وہ پپ لے رہا ہے نا. پپ, سوری, آپ نے کہا پپ لے رہا ہے, رائٹ, اوکے. اگر وہ ایکسیپشن میں آ جاتا ہے نا, تو اس کو پپ میں کتنے پیسے ملتے ہیں اس کو؟ وہ اس کو مڈل ریٹ 55 پاؤنڈ 54 پاؤنڈ ملتا ہے. اوکے. اور کوئی پیسے ملتے ہیں اس کو؟ نہیں, صرف یہی ہے. اوکے, سو 55 پاؤنڈ وہاں سے ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. اور اس کو اسٹوڈنٹ گرانٹ ملتی ہے یا نہیں؟ اسٹوڈنٹ گرانٹ ملتی ہے, اور اس کو کیریج الاؤنس ملتا ہے اور یونیورسل کریڈٹ. اوکے, اس کو یونیورسل کریڈٹ ملتا ہے. یونیورسل کریڈٹ کتنے پیسے ملتے ہیں اس کو؟ اس کو مہینے کے 200. مہینے کے 200 سے 50 پاؤنڈ وہاں سے, اوکے. آپ نے کہا اس کو کیریج الاؤنس ملتا ہے, اس کو تو نہیں ملتا؟ وہ لک آفٹر کرتا ہے اپنے بھائی کو. اوکے, اور کیریج الاؤنس کتنے ملتے ہیں اس کو؟ 64 پاؤنڈ. 64 پاؤنڈ ویک کا وہ ملتا ہے. جی, تو اس کو پیسے مل رہے ہیں ابھی, پپ 55 پاؤنڈز, کیریج الاؤنس 64 پاؤنڈز,
اور یونیورسل کریڈٹ ملتا ہے اس کو. سو رفلی اس کو 200 پپ کا ملتا ہے 220. جی مگر ہفتے کا ٹوٹل میں اس کو ملتا ہفتے کا دیکھتے ہیں نا وہ تو رفلی اباؤٹ £170 a week اس کو ملتے ہیں. اس کا کوئی رینٹل کاسٹ ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ اس کی انکم انف ہے. اچھا اگر وہ اپلائی کرنا چاہے تو اس کی انکم انف ہے اس میں, وہ اس بیسس پہ اپلائی کر سکتا ہے. تو پیپرز اس لڑکی کا تو پاسپورٹ بنا ہوا, انگلش ٹیسٹ بھی پاس ہے وہاں سے, اور یہاں سے کیا کون سے کاغذ کی ضرورت ہے جی جو اس لڑکے نے اپنی طرف سے دینے ہیں؟ اوکے سو پاکستان سے جو ڈاکیومنٹ آپ کو یہاں منگوانے ہیں وہ انگلش سرٹیفکیٹ, جی ٹی بی کی سرٹیفکیٹ, جی اور میرج جو نکاح نامہ ہے اور اس کا ٹرانسلیشن وہ انگلش میں ہے. جی تو وہ سارے اوریجنل ڈاکیومنٹس آپ کو یو کے میں منگانے پڑیں گے, وہ ہے یہاں ہے. اور آپ نے جو انکم کے بارے میں بات کی نا, تو ساری جو بینیفٹس اس کو ملتی ہے, پی آئی پی, کیئرز الاؤنس, جو بھی آپ کو ملتا ہے, یونیورسل کریڈٹ, تو اس کا لیٹر چاہیے آپ کو. ہاں لیٹر بھی اپڈیٹ ہے, اپڈیٹڈ لیٹر. پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹس چاہیے. وہ جو لڑکی کو پیسے بھیجتا ہے وہ بھی ہے؟ نہیں, جو لڑکے کے پاس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے نا, جس ہاں وہ اکاؤنٹ بھی پہ ہے پیسہ اس کے ہے, پاس. پھر وہ چاہیے رائٹ. Yeah. پھر آپ کو چاہیے گھر کے بارے میں کہ آپ کا گھر ہے, اس کا پروف چاہیے. جی پھر گھر کا رپورٹ بنانا پڑے گا کہ گھر میں کافی انف جگہ ہے رہنے کے لیے. ٹھیک. اور فائنلی اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ جینیوئن ہے, اس کے ڈاکیومنٹس چاہیے, شادی کے فوٹوز, شادی کے یہ وہ شادی کے فوٹوز ہیں, ڈی وی ڈیز ہیں. وہ لاسٹ ٹائم پاکستان کب گیا تھا؟ پاکستان گیا تھا اپریل میں دس ایئر. اوکے چلو, تو اس کے اپریل میں گئے تھے, اس کے بھی فوٹوز ہوں گے. وہ شادی کے فوٹو ہیں, جی. نکاح کے بھی دین اس کے بعد ٹیلی فون ریکارڈز, وہ ہیں, وہ سب وغیرہ میسیجز. سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو بتایا نا اس سے مجھ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس مین جو ڈاکیومنٹس ہے وہ ہے, وہ ٹھیک لگتا ہے. آپ نے جو بات کی اس سے مجھ کو لگتا ہے کہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ پہ کہاں پہ جمع کرانے ہیں یہ پیپر؟ یہ سب ڈاکیومنٹس ایک تو اس میں ایک آن لائن اپلیکیشن ہوتا ہے, تو جو کمپیوٹر پہ جو کرنا پڑتا ہے وہ آن لائن اپلیکیشن کریں گے تو لڑکی وہ پاکستان میں اس کے پاسپورٹ جمع کرے گی, اسلام آباد, میرپور, جہاں بھی ہے وہاں اس کے پاسپورٹ لڑکی وہاں جمع کرے گی. اور ڈاکیومنٹ سارے شیفیلڈ میں اس کے ایک آفس ہے, ہوم آفس کی, جی تو ہوم آفس میں بھیجنا پڑے گا. وہاں لے جاؤں جا کے وہاں جمع کرا دوں فیس کے بغیر, فیس کے سمیت؟ ہاں جی, فیس پے کر کے جمع کرنا پڑے گا آپ کو. وہ کتنا فیس ہے اس کی؟ فیس ابھی چل رہا ہے £2,800. تو وہ این ایچ ایس فیس بھی ہے ٹوٹل اس میں ملا کر £2,800 ہوتا ہے. جی ٹوٹل فیس 2,800 ہے. جی ٹھیک ہے نا. تھینک یو. سو یہ اوکے, جزاک اللہ آپ کے کال کے لیے, تھینک یو ویری مچ. ٹیک آ نیکسٹ کال. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, جی تھینک یو فار کالنگ. جی بھائی, کوشچن کیا؟ جی am I in the studio? Yeah, you are live on air. Okay. But I need to ask for some advice, please. I'm a father of my daughter just recently got married to a Tier 4 student. Right, okay. And we with permission from the Home Office, they got married. Okay. And now we're looking to apply or change his visa status from a Tier 4 onto a spouse visa, which is, I think, is FLRN or something like that. Yeah. My situation is that my daughter's been working for temporary contracts, initially for a private company, then onto NHS, and she's with NHS at the moment, and she has secured a permanent contract, which exceeds the income threshold of 18,400. Now, because it's only a recent, and we're looking to apply now, I also had a backup, so she basically had savings of 62,000, over 62,000, nearly 70,000 now. Okay. So I just wanted to find out which will be the best route for us to take, because obviously online application these days is, we're trying to go through online as well. Yeah. Okay. So what we're trying to find out is, should we wait and make an application once she is 6 months into her new job, and or if we should just apply based on is it category D savings or something like that? Yeah. Okay, I understand. Now, in terms of the savings, how long has the money been in her account?
In a sole name since 2015, I think. 2015, and it's the full £62,500. Yeah, the present balance is around 70,000. She should make the application based on the savings. They won't raise an issue. Yeah. The only thing you need to be aware of, not careful about, aware of, is you might want to address where she's got the money from. So if it's as a so what you then do is instead of putting the last 6 months bank statements in, you put the last year, last 2 years bank statements in, so they can clearly see that the money's been there for a considerable amount of time. So it's not like the money's just come into the account 6 months ago and now we have to explain that it's a gift from the parents or anything like that. The money has been there for a number of years. So put the old bank statements in as well. But I would definitely make the application and not wait to see what happens with the NHS job and to complete 6 months with the NHS employment, because it's not necessary to do that. Yeah, she's already got the job. She's got the offer letter. All we're waiting for is the permanent start date. Yeah, it's not. But it's best to apply for the savings route, isn't it? And is there anything additional information that we need to provide other than the statements? No. So what you need to do is provide the bank statements. Minimum is 6 months. I think you should provide more to show that the money's been there for a long time. Secondly, she needs to provide a declaration explaining it's her own money and how long it's been in the account and it's for her own use. So she needs to do that. That's it. There isn't anything else. There's only 2 requirements where you are relying on cash savings that need to be fulfilled. There isn't anything else. What I will just do is, we're probably going to go for a break in the next couple of minutes. I'll just check whether there's any additional requirements or not, and I'll deal with it as soon as we come back. But I'm 99% sure there's only 2 requirements. 6 months. So just they need a statement from me to say that I gave the money initially. I mean, it's her work money as well that she saved up. Okay, so you know the money, the vast majority of it. Have you given her that money, or? I initially gave her 30,000. That she built up nearly 30,000 of her own money. Okay. So then, I would normally be a bit cautious and then do a declaration from you, show your bank statement as well, transferring the money to her account, and say it was, assuming it's a gift, you say it was a gift that I made to my daughter, and I don't, it's an unconditional gift. It's her money, so I would do that as well. In my experience, if you give them the documents that they want, they won't query it, they'll accept it. So the bank statements, the declaration from her and you, they'll accept it. There's no need to wait for 6 months. Okay, and just lastly, has anything changed since online applications? No, the only thing that's changed is that the NHS fee's gone up, that's it. The NHS fee used to be £500 for a 2.5-year visa. The NHS fee now is £1,000 for a 2.5-year visa. Apart from that, nothing's changed at all. Okay. Jazakallah. Thank you. What I'll do is we're probably going to take a break in the next few minutes, but I'll look at the law again. We'll take the next call. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Ji bhai, thank you for calling. What's your question? सर जी क्वेश्चन है, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट हो जी तो आप पाकिस्तान से किसी बहन भाई को बुला सकते हैं? उसके पास एक रूल है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का रूल है. एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, उसका कोई प्रोसीजर क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट है. वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर पर वो कहते हैं कि आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं ना, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल्स, आंट्स, आप सबको बुला सकते हैं, मगर उसका रिक्वायरमेंट्स ये होते हैं कि आइदर जो यूरोपियन नेशनल है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो इटली में पहले था, तो अगर वो इटली में था तो वो जो भाई है अगर इटली में उसके साथ रहता था, या तो उसका भाई पाकिस्तान में था और वो इटली से पैसे भेजता था उसको, और फिर वो इटली से बंदा यूके आ गया और यूके में भी उसको पैसे वो भेज रहा है, तो वो सिचुएशन में वो कहते हैं कि आपका जो फैमिली मेंबर है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, आप उसको यहाँ बुला सकते हैं कि इटली में अगर वो रहता था आपके साथ, आप यहाँ आ गए तो आप उसको भी यहाँ
नहीं, पाकिस्तान से क्वेश्चन है पाकिस्तान से. हाँ राइट. तो वो सिचुएशन में क्या है कि ऑब्वियसली वी कांट शो के हाउस, उसको ये बताना पड़ता है कि जब जो यूके में आया ना, when he was in Italy, for example, when he was in Italy, तो he used to send money to Pakistan to him. ठीक है. उसको पैसे भेजता था भाई को. अभी वो यूके आ गया, अभी भी पैसे भेज रहा है उसको. तो वो बेसिस पे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का एप्लीकेशन डाल सकते हैं. बट मेरी एक्सपीरियंस में ये लोग नहीं देते हैं वीज़ा. कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देते हैं रिफ्यूज़ करने के लिए. कोई हो जाता लेकिन डिफिकल्ट है वैसे. वेरी डिफिकल्ट. उसके पास बहुत एक्सक्यूजेस है. वो कहते हैं कि हम एविडेंस से सेटिस्फाइड नहीं है कि आपने पैसे भेजे, फिर वो हम सेटिस्फाइड नहीं है कि उसको आपके पैसे की कोई ज़रूरत थी, वो खुद भी काम कर सकता था. हम सेटिस्फाइड नहीं है कि उसका पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, हो सकता है कि उसका भी ठीक ठाक सिचुएशन है, उसको वो भी काम कर सकता है. हम नहीं मानते कि आप उसका सपोर्ट करते हैं, कोई ज़रूरत थी, और ये सब आपने वीज़ा के लिए सिर्फ किया है. सो वो नॉर्मली कोई ना कोई रीज़न निकालते हैं रिफ्यूज़ करने के लिए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का एप्लीकेशन. जो हस्बैंड वाइफ कानून है, कानून तो है 100% है. उसका बड़ा डिटेल गाइडेंस भी है. आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे और डालेंगे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होम ऑफिस गाइडेंस, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर होम ऑफिस गाइडेंस, तो एक बुक निकलेगी होम ऑफिस की, रफली 30-40 पेजेस की, कि क्या रूल्स है. तो रूल्स है, गाइडेंस भी है, सब कुछ है. मगर ये लोग को वीज़ा नहीं देना है उसको. ये है, देना ही नहीं है उसको वीज़ा. थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम है. जस्ट थैंक यू. टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. जी भाई. A moment ago, my wife had a word with you regarding the to apply stay here in this country on the basis of kids. जी, नो प्रॉब्लम. जी. Completed 7 years. Okay. So now we are around to complete the 7 years. Okay. So how many times do we need to apply for the 2.5 years extension? हाँ, so total you have to complete 10 years with a visa. 10 years. 10 years. Okay. So you will end up applying 1, 2, 3 times, and the 4th time you will apply for indefinite leave. So after this 7 years are wasted hours. So after that we need to apply for 4 times for 2.5 years extension. हाँ, well 3 times, ne? So 2.5, 2.5, 2.5, and then the 4th time you apply for indefinite leave. जी. Okay, so we need to complete fresh 10 years in this country. जी, ये है ना कि you have to complete fresh 10 years in the country as somebody who is legal with a visa. वो old rules है ना, different है. वो it was easier, वो तो अभी change हो गया ना. अभी तो you have to complete 10 years with a visa. With a visa. तो change हो गया अभी तो. पहले तो ये था. What about that case we have put in the tribunal? If we fight that case, is that good enough? ट्राइब्यूनल में क्या चल रहा है? ट्राइब्यूनल का ये है ना कि अगर ट्राइब्यूनल में आप गए और वीज़ा नहीं मिला आपको, तो फिर दे डोंट काउंट दैट ने. दे विल ओनली काउंट इट फ्रॉम व्हेन यू गेट द वीज़ा. Okay. So it will only if we fight that case to High Court and to Supreme Court, even in the end maybe we get the visa, so then we don't have the palaver. There are huge fees, a family of 6 people. जी. So how much is the per applicant fees nowadays? The fees per person with the NHS fee at the moment is 2,033 per person. For one person. Per person, yeah, 2,033. It's very, very expensive. 2,033. I mean, if it's difficult to get around the fees. Sometimes, for example, अगर is there any chance you can give us a time in your office? You can't do, but whereabouts do you live? Yeah, we are from Dewsbury. Yeah, you can come to Dewsbury. Yeah, that's fine. If you phone my office and make an appointment, not a problem. We can look at that. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Okay. Right, that takes us to our break. Inshallah, we'll be back in the next few minutes.